Conditions of this election in West Bengal are concerned, let me just emphasize one very important factor. This is not an election to elect the government for West Bengal. This is an election for a very fundamental principle that has been supported by freedom-loving people all across the country, either students or people from the labor movement, people from civil society, young professionals, farmers, youth across the board, and that's basically the 5 years of severe oppression in the country and denial of fundamental rights of people. Now, of course, we have institutions like the Supreme Court, we have institutions like the Election Commission, who are to ensure that a fair level playing field is provided as far as elections are concerned, and that the citizen does not suffer at the hands of the state. Now, in many matters, we can express our satisfaction, but there are many matters that, because of paucity of time or the fact that there is a heavy dependency of cases before the Supreme Court and the High Court, that we can't get adequate relief in good time. And therefore, political action and political support for people who are fighting against oppression becomes exceedingly important. We've seen what's happened in universities. I, for one, can speak of JLU, in which I have been very seen from very close quarters. The fact that we still haven't found an answer to a very important factor that young student of JLU, Najib, who still has not been traced after months and months of effort. I hope there will be an effort, but not to be able to find a person who out of the blue suddenly disappears, and that not just in a vacuum. The Prime Minister, what kind of team that person will have, what kind of combinations will happen. He has very categorically said that we will consider these after the 23rd of May. We don't want anything right now to create any fissures between parties that have come together in the Grand Alliance across the country, and a major number of parties have done so. We are sorry and disappointed that some parties couldn't join the Grand Alliance across the country. In my own state of UP, for instance, Samajwadi Party and BSP were reluctant to join the Grand Alliance. We've never been able to understand why. We've never been able to understand what their future plans are. And it's the same thing I'm afraid I have to say for Bengal. What are the future plans of the leader of the party in power in Bengal is a big question mark. We know the background. There has to be ideological integrity. And we are sorry to say that ideological integrity is certainly not apparent in the decisions that she has taken over the few years in which she has come to power in Bengal. Now, can we be certain? We would want to hope for the best. We hope that the best attitudes and the best and transparent methods will propel them towards a sensible, civilized government at the center of the 23rd of May. But all that will be post 23rd of May. Today, we have joined the battle with sincerity, with vigor, with all efforts that we can put at our command, and we are hoping and urging the people of West Bengal to send as many Congress candidates to the center so that it serves the purpose that we have held out transparently towards the whole country. And this place is a very important attempts that have been made by Mr. Modi and his government to polarize the country along non-issues, along pseudo-issues, questioning the national integrity of all opposition parties other than the BJP itself. Now, I believe, and I want to say this on record,
that we are confident that our record of nationalism is far greater, stronger, and deeper than the BJP can ever imagine itself to be. And that's very categorical. Pseudo-nationalism is not true nationalism. Patriotism is not about power. Patriotism is about the welfare of the people of the country and the safety and security of the people. We don't need to give you examples of how many compromises we made by the BJP over the last 5 years with forces that we would keep at an arm's length, whether it was in Jammu and Kashmir or even in dealing with Pakistan. Now, I was completely appalled as a former foreign minister. I was completely appalled when I heard the Prime Minister of Pakistan say that for peace with India, Narendra Modi has to become Prime Minister again. Now, that is a conundrum that will require a genius to understand. If the Prime Minister of Pakistan wants to make peace with India, saying he just has to do what he has to do, which is give up his active support for terrorism and North India. And that can be done irrespective of who is the Prime Minister of our country. But on the other hand, if Mr. Narendra Modi had promised Mr. Imran Khan something, then obviously, in order to fulfill that promise, Mr. Imran Khan needs Narendra Modi to be Prime Minister of India. Now, we would like to know what is it that he is whispered in Mr. Imran Khan's ear. What kind of promises have he made which are detrimental to India's sovereignty, integrity, and India's dignity? What kind of promises have he made in return for Imran Khan saying that Mr. Narendra Modi should become Prime Minister again? This is very categorical and very clear. Thirdly, we are extremely sad by the fact that Mr. Narendra Modi tried to undermine our former Prime Minister, Mr. Dr. Manmohan Singh, and he said, really because he must have been pushed to a wall. These are things that he doesn't like talking about. These are things that we don't like talking about. But for him to say that we did surgical strikes during our time, only because Mr. Modi was tom-tomming 1 or 2 surgical strikes that he's supposed to make. What is done strategically by the armed forces in order to ensure that there is adequate protection provided to the people of our country is something that we don't talk about. This is first fundamental principle of strategic thinking that you don't talk about. The minimalist information is given out to the public in order to ensure that there is no speculation. But you don't go into details, you don't go tom-tomming. In fact, you don't even disclose which unit has been operational and which unit is involved. Now, we could not have done better on this than to have got General Huda to assist us in formulation of a strategic position as far as India's sovereignty and India's security is concerned, which is what we have done. We don't want to make this into a street spat. This is a serious matter and it should be considered only by people who have adequate information and knowledge of the field. Lastly, I want to say about the conditions here in the Western world. I've been to a few parts of the Western world. I am sorry to say that you in the past have had very bad time in terms of law and order, and I certainly see a very serious deterioration in law and order in the state of the Western world. Is that because the police is being manipulated? Is that because the security forces and agencies are not being allowed to operate independently and autonomously? Is it because the ruling party has been pumped with people who in the past have been known to be clearly of criminal intent and criminal conduct and behavior, who today have a free run of the state? And I think this is really, really sad. This kind of thing that has happened in the state is really, really sad. Your general growth trajectory is very low. There is no new investment coming into West Bengal. And if the criminal elements are taking over the streets of West Bengal, I just think of how sad it is that the potential of West Bengal is being destroyed at the altar of power, at the altar
of power that is completely blemished by widespread corruption. Corruption is not something that we will fight against only if the people who join that fight themselves do not come clean. If they would come clean and we would come clean, then there would be a better battle. But all this is to be left to beyond 23rd of May. Today will be elected to the Communist Party, so the Communist Party can do its national responsibility at the time after 23rd of May in displacing and replacing Mr. Modi, his government and his party from power. Thank you very much. So you take on the last 4 phase of election, especially paper. Well, the thing is, you're asking me to predict something. No, I'm asking you to observation. Your observation with regard to the poll that has been completed. So my observation about polls that happened would not be fair because I wasn't here. I was fighting the 4th phase myself. So I think it would be a little unfair for me to comment on the 4th phase. We have our colleagues here who have seen every moment, every minute of the 4 phases that have passed. And therefore, it would be a little presumptuous on my part to comment on the 4th phase. My colleagues are here, they will certainly come back. Mr. Pichit, and regard to the question about the citizenship of Mr. Rahul Gandhi, that it is something is said about the timing of this issue from the Congress quarters. But don't you think that this issue must be addressed sometime? Well, we will address all issues, and Mr. Rahul Gandhi's office is addressing all issues. The fact is that if somebody says and reports, and you're a reporter, then you know that this is an example that must have been given to you 100 times. If somebody says the dog has bitten the man, nobody is asked to explain why it happened. But if somebody says the man has bitten the dog, the other people are going to ask. Now, if there are allegations of that nature that the man has bitten the dog, and then you insist on an explanation immediately, I would say that just wait in turn the explanation will be given. Citizenship law is not a joke. Citizenship law is not what people make it out to be. For citizenship, let me just tell you, irrespective of what the context is of Mr. Rahul Gandhi's allegation against him, citizenship remains with you in such time, and there is a formal renunciation of citizenship. Citizenship is by birth. Citizenship is by birth, and the law is very clear on that. Unless there is renunciation, your citizenship remains. Now, there are many countries where there are dual citizenship. Because there cannot be a citizenship that we accept unless there is a renunciation of citizenship. And on this, the law has been amended. I have argued these matters quite often. The law was amended in which merely holding a passport also of another country does not amount to a renunciation of your own citizenship. So it's a very complicated area of law, and those who are playing with it, I'm sorry, I don't think that they are taking your understanding of the law very seriously when they make them file allegations. But if there are allegations that are made seriously about our leadership will appropriately answer it. Your question as to whether this is, everyone who's asking this question has been around for a long time, and they could have asked this question earlier. Why are they asking this question on the eve of a critical decision that this country has to make about who will lead the future of our people, of our children's destiny? Sir, यूपी में सपा और बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका, बंगाल में भाजपा के साथ कई प्रयास हुए। तो 23 मई के बाद आप लोग कल्पना करें कि महागठबंधन की सरकार बनाएगी। देखिए, माननीय रावत जी ने ये कहा है कि जिसने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने ये कहा था, इसलिए मैं आपको दोहरा सकता हूँ कि जिसने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, हम चाहते थे गठबंधन हो जाए, और अगर गठबंधन हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ हो जाती। लेकिन उन्होंने नहीं किया, हम उनका सम्मान करते हैं। वो अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, और पूरा सम्मान करते हुए मुझे कुछ जानकारी मिली है कि बहुत सारे वो निर्णय जो हम चाहते थे, उत्तर प्रदेश की ओर से हम चाहते थे कि माननीय रावत जी ले लें, उन्होंने नहीं लिए, सिर्फ इसलिए उन्होंने इस फैसले का सम्मान किया, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिसको समाजवादी पार्टी और बसपा ये समझे कि हम
उनसे उनसे पैर मांगकर ये चुनाव लड़े। हम पूरी शक्ति के साथ सशक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी 23 मई को जो भी स्थिति उत्पन्न हुई उस स्थिति में हर एक अपना अपना निर्णय लेगा और जैसे लोगों ने अभी निर्णय लिया था हमारे साथ ना आने का, वैसे 23 मई को इनको नया निर्णय लेना होगा। देखते हैं क्या निर्णय लेंगे। पश्चिम बंगाल कहीं पीछे रह गया है प्रचार में, कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया। जो मैंने कल देखा उससे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमने कोई प्रचार नहीं किया। बहुत दमखम से प्रचार हम पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, लेकिन एक कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है कि हम जो भी प्रचार कर रहे हैं और जो भी हम इस चुनाव में कर रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं, हम इस बात को अपने माइंड में रख कर रहे हैं कि कल चलकर 23 मई के बाद क्या हो सकता है, क्या संभावना है। इसलिए कि ये चुनाव गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो गठबंधन चुनाव से पहले हो या बाद में, गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में हमने आज से 3 महीने 4 महीने पहले ये निर्णय लिया था कि हम गठबंधन करना चाहिए। करना पड़ रहा है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमें गठबंधन करना चाहिए कि कोई चांस ना हो बीजेपी को वापस सरकार में आने। इस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है तो ऐसा ना हो कि हम चुनाव अभियान में ऐसे जाएं कि कल को 23 मई के बाद आपस में बैठना असंभव हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने शिष्टाचार को बनाकर रखा है और शिष्टाचार में उत्तर प्रदेश में हमने जब उन्होंने गठबंधन उत्तर प्रदेश गठबंधन से 2 सीट हमारी छोड़ी, हमने उनके लिए 7 सीटें छोड़ी, इसलिए कि हमने हमारा गठबंधन नहीं है लेकिन शिष्टाचार को मानते हुए। तो जो बड़ी पार्टी होती है वो थोड़ी सी उदारता ज़्यादा दिखानी पड़ती है, थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा दिखानी पड़ती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका एक संतुलित एक बैलेंस हमने हर प्रांत में किया है और हर प्रांत की जो लीडरशिप है उन्होंने जो भी परामर्श दिया है वैसे ही हमारी ये पार्टी है। आपने कुछ दिनों पहले कहा कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी अच्छा नतीजा करेगी, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी इस तरह से देखने को मिलेगा? देखिए वो यहाँ आए तो ना, अभी जहाँ जहाँ वो जा रही है मैं वहाँ कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ वो जा रही है उनका एक देखा है वहाँ पर इसमें कोई दुराई नहीं है कि इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। अब देखने में जो प्रभाव है उसको ही हम इनको में बंद करके देखें और गंगा की बात भी देखें तब पता चलेगा। लेकिन ऐसा है कि वो अभी उनका जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश रहा है और उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटों पर विशेष फोकस है। पिछले 4-5 महीने विशेष 2 सीटों पर उनका फोकस है। केरला में भी उनका थोड़ा सा फोकस था क्योंकि राहुल जी ने केरला में भी पर्चा भरा था, लेकिन अभी चूंकि उनका पहला कदम है राजनीति में और उन्होंने ये दायित्व अपने अनुभव पर लिया कि वो उत्तर प्रदेश को पहले खड़ा करेंगी और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि 2022 में उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। इसलिए अभी उस पर पूरे देश का भार उनके कंधों पर डाले नहीं होगा। जितना उन्होंने अभी दिया है मैं मानता हूँ हम ये स्वीकार करें कि उतना ही उनको हम पूरा सहयोग दें और उम्मीद करें तो वहाँ उनका प्रभाव अवश्य है। पश्चिम बंगाल में शिष्टाचार वाली बात से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं तृणमूल के साथ आप गठबंधन की आस लगा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? आस नहीं है, देखिए आस लगाना गलत है। मैंने कहा कि वास्तविकता है मुझे कहना नहीं चाहिए। तृणमूल का फैसला होगा कि वो बीजेपी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, उनका फैसला होगा, ठीक है ना। लेकिन हम दरवाजे क्यों बंद करें? अगर हमें बीजेपी को हटाना है हम दरवाजे खुले रखेंगे, जो हमारे पास आने के लिए तैयार होगा, लेकिन उससे कुछ तो चर्चा होगी, चर्चा के बाद ही निर्णय होगा। हम नहीं किसी को धक्का देना चाहते हैं, लेकिन किसी को ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि हम मजबूर हैं और हम उनके दरवाजे पहुंचेंगे, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन परिप्रेक्ष्य हम ना भूलें। परिप्रेक्ष्य ये है कि आने वाले समय में संभवतः एक गठबंधन की ही सरकार होगी। गठबंधन की का क्या कॉन्ट्रोवर्स होंगे वो 23 मई के बाद जो भी स्थिति होती है, जो परिणाम आते हैं उस पर ही निर्भर होगा। आज से कुछ कह देना मैं समझता हूँ कोई समझदारी की बात या उचित बात नहीं हो, लेकिन ये मत मानिए कि शिष्टाचार को आप वहां तक ले जाएं कि हम कहीं अपनी
ऐसे एक खबर फैला गया है कि अब 19 तारीख को लास्ट फेज में आ जाएगा। उसी एग्जिट पोल का नतीजे में सामने रखते हुए सब अपोजिशन पार्टी के लीडर को राहुल जी ने दिल्ली में एक बैठक पे बोला, वो क्या प्रायर टू 23rd होगा या इन बिटवीन 19th एंड 23rd होगा या आफ्टर 23rd? देखिए, हम लोग एक बड़े शातिर, ये क्रेडिट को नहीं ले सकता, तो क्रेडिट राहुल जी लेंगे, लेकिन हम हमारे सामने एक बड़ा शातिर एक खिलाड़ी है हमारे सामने, और इसके शातिर खिलाड़ी के लिए हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। और इसलिए जब कुछ संकेत दिखे, जब एग्जिट पोल्स आएंगे, उससे पहले पार्टियां अपने अनुभव से और अपने अनुमान से कुछ आइडिया कर लेंगे कि हमारी स्थिति क्या होगी। एग्जिट पोल कभी उसको दोहराते हैं, कभी उसको घुसाते हैं, लेकिन हर पार्टी अपनी अंदरूनी कुछ ना कुछ अनुमान लगाती है। तो अगर अंदरूनी अनुमान से 19 तारीख को हम लोग किसी स्थिति में पहुंचते हैं और किसी अनुमान पर पहुंचते हैं, तो समझदारी की बात होगी कि हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं अभी भी बातचीत चल रही हो, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन जल्द से जल्द हम अपने सारे ही साथियों को इकट्ठा कर लें और मजबूती से राष्ट्रपति महोदय को ये बताएं कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है। तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमारे सामने जो हमारे अनुभव हैं, विभिन्न प्रांतों के जो अनुभव हैं, एक बड़े शातिर खिलाड़ी का मुकाबला करेंगे। साहब बताइए, 4 फेज का इलेक्शन हो गया, आप जो अभी जो हिस्से आप लोग विधायक हैं, उसमें से क्या पिक्चर आपको दिख रहा है? हम उनसे आगे, कितना आगे, मतलब हम एनडीए से आगे, अब ये नहीं बताऊंगा कितने आगे, इसलिए उनको फिर हमारी विचार पता चल रहे हैं, लेकिन हम उनसे आगे। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस मसूद अजहर पर खामोश है, वो नहीं देगी। इसके मुकाबले से मसूद अजहर को लेकर मसूद अजहर यूनाइटेड नेशंस से उनके बोलना चाहिए कुछ। बीजेपी ने ऐसा एलिगेशन जो बीजेपी इतना बोल रही है, तो और करवाया था, शायद बीजेपी को ये मालूम है। बीजेपी आगे और पीछे इतना कम जानती है कि वो बिल्कुल अपनी नाक से नहीं देख पाती है, ना आगे देख पाती है, ना पीछे देख पाती है। वो ये भूल गए हैं कि मसूद अजहर के ऊपर जो कार्रवाई शुरू की गई थी, वो किसने की थी, तो शेष किसने लिए थे, कितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना प्रयास किया था, हम लोगों ने फॉरेन मिनिस्ट्री से उसको कितना परस्यू किया था, ये सब समझना चाहिए। और ये बात भी समझनी चाहिए कि वो ये मानते हैं कि इस समय वो कामयाब हो गए चीन को लेकर, लेकिन चीन ने भी तो कुछ हमसे लिया होगा, इसीलिए चीन मान गया। और चीन ने हमसे जो लिया है उसमें एक विशेष नीतिगत रूप से शायद मोदी साहब ने वो कुछ दे दिया है जो मोदी साहब को नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसा भी है, मसूद अजहर पर कार्रवाई हुई है वो अच्छा है, लेकिन अब कार्रवाई के बाद और क्या? कार्रवाई के बाद वो वहाँ आराम से रहेंगे। कार्रवाई के बाद भारतीय सरकार जो है इतनी संतुष्ट हो गई कि अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनका ट्रायल होना चाहिए, और ट्रायल की मांग करें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। मैं करता हूँ कि उनका ट्रायल होना चाहिए। अगर वो ग्लोबल टेररिस्ट है तो ग्लोबल टेररिस्ट होते हुए कम से कम लोग उनको ट्राई करें, और ट्राई करके उनको सजा दे, तब मांग करें। एक और सवाल है कि बंगाल में एक तरफ सीपीएम के साथ अलायंस का दरवाजा खुला है, एक तरफ इन दोनों के साथ भी अलायंस हो सकता है, मतलब इधर आपने एक वक्त होने लगा है। मैंने कुछ नहीं कहा किसके साथ अलायंस हो सकता है, मैंने सिर्फ ये कहा कि अलायंस की स्थिति होगी, इसलिए कि जो अभी तक अनुमान हमारे हैं वो ये है कि एक बड़ी पार्टी के साथ और बहुत सारी पार्टी जोड़कर अलायंस कर सकती है, लेकिन कौन और किसके पास कितना होगा वोट और किसके पास कितनी होगी सीट से तो 23 के बाद ही पता लगेगा। और 23 में हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए, उसको पहले से कुछ कहकर मुझे बिगाड़ना नहीं चाहिए ना। जो भी होगा तब देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो भी निर्णय लेंगे उसको आम जनता जो है उसको अपना सराहना उसको करेगी और उसको सपोर्ट करेगी, अपना समर्थन देगी। लेकिन आपका ये will get the part of PMC मैक्सिमम सीट ये मेरे लीडर ने ऐसा नहीं कहा है, मेरे लीडर ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक रीजनेबल बात है। रीजनेबल बात क्या है, जैसे मैंने कल एक सभा में कहा था, अंग्रेजी की कहावत है, आप जानते हो, dog wags the tail, not the tail wags the dog। ये हकीकत है, लेकिन अब दूरदर्शिता से
सब लोग जब आपस में बैठेंगे तो हमारे नेता सब बैठकर क्या निर्णय लेते हैं उस पर मैं आज कुछ कह नहीं सकता हूँ, कोई ना कहना चाहिए, इसलिए कि पूरी उनके लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और छूट होनी चाहिए। हमारा मेन प्राइमरी पर्पस है नरेंद्र मोदी को जाना, और वो राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है, नरेंद्र मोदी इज नॉट कमिंग बैक एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। अब हमको सिर्फ एक ही चीज दिखनी है, हमको चिड़िया की आंख दिखनी है और कुछ नहीं दिखना है। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है और चिड़िया की आंख में नजर मोदी। अपने गठबंधन की सरकार बताइए, अपने सीनियर लीडर है कांग्रेस को कितना सीट मिलेगी पूरे देश में, आपका सेल्फ असेसमेंट? नहीं, मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारी जो भी सीट्स होंगी वो और किसी भी पार्टी से कम 10, 12, 15% 10, 12, 15 टाइम्स ज्यादा किसी और पार्टी से। टाइम्स हैदराबाद की आपके साथ जाएगी जी, तृणमूल कांग्रेस I don't know, आज तो उनसे चुनाव लड़ रहे हैं, आज तो उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप उनसे पूछिए ना, आप उससे कैसे पूछ सकते हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, वो आप उनसे पूछिए। हमारा तो द्वार खुला है, खुला ही रहेगा सभी के लिए। लेकिन जब तक हम द्वार तक पहुंचते हैं उससे पहले हम सशक्त रूप से लड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी सीटें। বিভিন্ন বিষয়ে ভিডিও পেতে চ্যানেল হিন্দুস্তানের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/channelhindustan।